Welcome to Hornbilltv. Moise Muamla, that's our Hornbilltv Roundup News. Russia or Ukraine desh majode larai jai thakya homo Ukraine pra modot mangya nishina Netherlands pra 200 air defense rockets to supply kuri jesi kugina Dutch soccer pra parliament laga chiti de kushe nega hoigina western Ukrainian city laga Lviv pra Dutch embassy staffs kan Jaroslo they move crew lese our security deteriorating nimide Poland laga border pra jawlese allies kan logo goods kan bi pra Pratak Julie deliver crew defense ministry pra M crease. Mune laga age devi Netherlands pra rifles, ammunition, radar systems are mine detecting robots kanto patawle wada kurina se. Prime Minister Narendra Modi pra Union Ministry of Health and Family Welfare laga post union budget webinar do address kriya homoy kushe ki du budget 2022 laga focus to health sector laga health or wellness se focus ase kuina or the focus say tinta factors consideration it hakiado modern infrastructure or human resource expansion encouraging research adopting modern or futuristic technology khana se kusha आज हमारा फोकस हेल्थ पर तो है ही वेलनेस पर भी उतना ही अधिक है हम इलनेस के लिए जिम्मेदार फैक्टर्स को दूर करने वेलनेस के लिए समाज को प्रोत्साहित करने और बीमारी की स्थिति में इलाज को इंक्लूसिव बनाने पर फोकस कर रहे हैं होलिस्टिक और इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं तो इसमें 3 फैक्टर्स का समावेश कर रहे हैं पहला मॉडर्न मेडिकल साइंस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स का विस्तार दूसरा आयुष जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति में रिसर्च को प्रोत्साहन और हेल्थ केयर सिस्टम में उसका एक्टिव एंगेजमेंट और तीसरा मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के हर व्यक्ति हर हिस्से तक बेहतर और अफोर्डेबल हेल्थ केयर सुविधाएं पहुंचाना Prime Minister Narendra Modi pra February 26 the Union Ministry of Health and Family Welfare laga post union budget webinar de address kura samoy kushe ki sarkar do one India one health laga spirit kam krise aro India re health infrastructure banawale mona se kushe हम भारत में ऐसा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं जो सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित ना हो वन अर्थ वन हेल्थ इसी स्पिरिट को हमें हिंदुस्तान में भी वन इंडिया वन हेल्थ इस मिशन को भी वैसे ही यानी दूर दराज के क्षेत्रों में भी समान व्यवस्थाएं विकसित करना है हमारा प्रयास है कि क्रिटिकल हेल्थ केयर सुविधाएं ब्लॉक स्तर पर भी हो जिला स्तर पर भी हो गांवों के नजदीक भी हो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना और समय समय पर अपग्रेड करना बहुत जरूरी है Union Health Ministry of Health and Family Welfare laga post union budget webinar de Prime Minister Narendra Modi pra address dia homoy kushe Cowin aro Ayushman Bharat digital mission kan laga platforms kan pra digital technology laga role do dunia sob de janai dese कोरोना वैक्सीनेशन में कोविन जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी का लोहा पूरी दुनिया ने माना है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंज्यूमर और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच एक आसान इंटरफेस उपलब्ध कराता है इससे देश में उपचार पाना और देना दोनों बहुत आसान हो जाएंगे इतना ही नहीं
ये भारत के क्वालिटी और अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम की President Ramnath Kovind pra February 25 te lachit Barphugan laga 400th birth anniversary de Guwahati Assam de tribute dishe occasion address kura samoita pra kushe ki lachit Barphugan do itabi mandalaga mond hero ase aro country laga brave soldiers khan kane dangor inspiration ase kushe 22 को हुआ था। आगे चलकर वे अहोम साम्राज्य के सेनापति अर्थात बोड़फुकन के पद तक पहुँचे। उनके लिए देश परिवार से बढ़कर था और देशभक्ति के मार्ग पर चलते हुए वे किसी भी बलिदान से नहीं। 24 नवंबर के दिन उनकी जयंती राज्य भर में लासित दिवस के रूप में मनाई जाती है। देशवासियों के हृदय में लासित एक राष्ट्र नायक के रूप में विराजमान है। वर्ष 1999 में नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में लासित बोड़फुकन स्वर्ण पदक पुरस्कार की स्थापना की गई, जो प्रतिवर्ष सर्वश्रेष्ठ कैडेट को दी। Nagaland COVID cases asti namia pichude state sarkar pra COVID-19 situation review kurina kumba activities February 16 per relax kuidigina itya offline classes public social gathering shopping or transport services kind normal pra jaise Nagaland COVID restrictions relax kuidia pichude district surveillance unit khan Dimapur railway station de duty kuriya kiniga ase jankari kurishe abi ground reports our report at nalogode Ita moi Dimapur railway station de aina se to itu sal COVID third wave aigena yade moa naga stage te bisi manugan digdar paigena ahina moan dikhi pai ase kintu itu COVID situation to bal alo aste bal hua nimite state government bi situation review kurigena February 15 ra meeting kurigena itu COVID restriction to alop lift kuridigena ita public gatherings noilibi schools kan noilibi night curfew kan bi itu hatai digina ita moganaga stage te bacha kan bi school jai ase aro May 1st bra itu pre primary schools kan bi itu school stage ja suru hole ase itu opor yete railway station te kiniga itu surveillance team kan bi ita tagan functions kuria ase itu jankari kuribo nimite moan ita railway station te aina ase to moan ita dikhi pai ase ki itu yate ita tak railway station Dimapur de do surveillance teams kan lagai kena ita tak bi tagan itu situations inbound passengers noil kan ke bi itu monitored kuri kena tagan ita duty kuri ase to itu por mogan tagan laga duties kan bi itu COVID restriction alop lift kuri dia pichi de kiniga jai ase tagan laga duties kan bi itu relax way as na nai aro itu laga update lobo nimite yate moan aina ase to yete surveillance teams officials kan bi takhan isna takhan ki bi hudi sabo apni gala duty bi alop relax hoisna na kini ka ase tia oi koinjina itia to ajikali to poila inchina noi na itia to alop normal hoi jai ase suchin to itia to alop normal hoi jai ase to apni gala duties to checking kan to kini ka jai ase itu le ini manubi poila inchina iman usop koinjina vaccination kan ase itia to manubi iman kiman hai itia to ini kumti chole ase to hoilibi apni gan poila ja sal bra yete boy kina duty kuri kina taka to itu COVID vaccination certificate noilibi vaccine marisna maranai itu kan check kuri asna ite tak bi na kini ka ase ini tahan sop itu 2 dose lo kan ase second dose lo kan ase to itia to ini get inter nimiti itu amkan iti bra ini from kan ki digina pathaya itu ase aro test kura ase itu medical kan bra to mane poila kini ka ja ase itu nisna ja ase ite tak bi ite tak oi itu ini ga ase district administration side fale par bi ku apni gan ke itu relax kurule duties kan do relax kurule ku ite tak asna na ite tak tole amkan ke itu iku information dia na poila kinga ja ase itu ini ga ja ase aro tagan ini kite itu amkan ke itu hatai itu ki urki ase amkan do ini administration ba itu kite order dibo itu sidi amkan do jaibo to ite moan yate bahar de exit point de rukhina ase to yate passengers kan bi itu bahar pra manu kan bi ase to ta taijun ke bi hudi sabo apni dijun do kote pra aise ta Guwahati. Yeah, we are coming from Guwahati. to ite apni an dijun Guwahati pra to Guwahati train station de bi kiniga iniga ite tak COVID vaccination certificates kan check kurina ayas na kiniga ase No. There is relaxation. Relaxation is there. There is no like checking of the COVID certificate. Is no checking.
গুৱাহাটীটো একো চেক নকৰা হৈছে মানে এতিয়া No. Total relaxation. There is no checking of any certificate. ইয়াতেতো আপুনি কাৰণ দেখিয়া নিচিনা অফিচাৰ্ছ কোনোবা কাৰণ চেক কৰি আছে কেনেকুৱা লাগি আছে It's okay. There is no problem. We have certificate and everything, and we have take 2 doses, so there is no problem. তো আপুনি লাভি অপিনিয়ন ল'বলৈ মন আছে মই এতিয়া আপুনি লাচাতি কোৱা নিচিনা গুৱাহাটীতেতো একো চেকিং কাৰণ নকৰা হৈছে গৈছে তো এতিয়া নাগালেণ্ডেতো ডিমাপুৰতেতো কৰি আছে তো আপুনি এইটো ওপৰত কি কৈ দিব পাৰিব প্ৰিকশ্যনেৰী মেজাৰ্ছ ওপৰত ঠিকে আছে অলপ চেকিং কৰিলে ঠিকে আছে বাৰু কোনো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু গুৱাহাটীত তেনেকুৱা কোনো চেকিং কোনো হেৰি এনেকুৱা প্ৰব্লেম নাই মানে ঠিকে আছে চব নৰ্মেল গুৱাহাটীত গোটেই নৰ্মেলে আছে বাছ ইয়াতে অলপ চেকিং আছে অলপ কথা নাই চেকিং অলপ থাকিলে ভাল আৰু বস্তুটো গম পোৱা যায় কোনো প্ৰব্লেম নাই সেইটো ছেফটি নিমিতে আছে তো এনেকুৱা গুৱাহাটীতে বি নকৰিলে বি ইয়াতে কৰিছে বোলে এটা That's good. Yeah, checking must be done because the virus is. Every person should take first and second dose, and its checking is going on for the certificate. That's good. তো এতিয়া মোকান ইয়াতে দুটা পেচেঞ্জাৰ্ছ অহা কাৰণে মোকান বি সুধিছে ইয়াতে নাগালেণ্ডে একলা নহয় না আসাম গুৱাহাটী ট্ৰেইন ষ্টেচনতে বি কেনেকুৱা এইটো ক'ভিড চাৰ্টিফিকেট ভেকচিনেশ্যন মাৰিছে না মাৰা নাই নহ'লে বি এইটো RT-PCR টেষ্ট খান বি লৈছে না লোৱা নাই এইটো ওপৰত মোকান সুধিছে তো মোকান জানি পোৱা নিচিনা গুৱাহাটীতেতো এতিয়াতো ৰিলেক্স হৈ কিনে ক'ভিড ভেকচিনেশ্যন চাৰ্টিফিকেটছ না এইটো ভেকচিন মাৰিছে না মাৰা নাই নহ'লে বি এইটো নেগেটিভ টেষ্ট ৰিপৰ্ট কাৰণটো একো চেক নকৰা হৈছে কৈছে কিন্তু এতিয়া মই নাগালেণ্ডে ইয়াতে ট্ৰেইন ষ্টেচনতেতো চাৰ্ভিলেঞ্চ টিম লগাই কিনে এতিয়া তাক ইনবৰ্ন পেচেঞ্জাৰ্ছ খানকে মনিটৰ্ড কৰি কিনে এতিয়া তাক বি যাই আছে তো এইটো এটা ভাল খবৰ আছে কেলে মানে প্ৰিকশ্যনেৰী মেজাৰ্ছ নিমিতে এতিয়া তাক ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন নহ'লে বি ইয়াতে থকা অফিচিয়েলছ খান এইটো এটা কনচাৰ্ণ লৈ কিনে এতিয়া তাক নাগালেণ্ডেতো চেক কৰি কিনে এতিয়া ক'ভিড প্ৰিকশ্যনেৰী মেজাৰ্ছ নিমিতে এইটো যাই আছে এইটো আছে আজি গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট মই এডনাই আৰু উইথ কেমেৰা পাৰ্চন জয় Hornbilltv Kohima is Get Hotel Day, aji improving information dissemination in Nagaland laga team under de ekdin gane media workshop to thakise. Dulaga program the Press Information Bureau Kohima Ministry of Information and Broadcasting GOI organize kushe aru program de Joint Director Information and Public Relations Asangla Imsong pra khota kriya homoy kumba developmental programs kan highlight krubu karne media pra important role play kore koina kushe. These days we have a lot of media. We are so conversant with the print media, the electronic media to some certain extent. But now we have this onslaught of digital media, social media, and non-traditional media, of course, like FM channels and everything. So how do we go about it? Now I remember when we first joined, like many years ago, social media was not very, Facebook was there, but the others were not, YouTube channels and all were very few. So the main source of information for the public was the print medium. So you come to know about the schemes of the government maybe through the newspapers. But now, a lot of other media has come in, which are more quick, more effective because we people now we tend to just be on the phone and every information is. Nagaland welfare scheme laga implementation review kriya opore khota kurigina Kohima Press Club laga President Alice Yoshupra kushe Center aro State Prabi welfare scheme khando sponsored kore hulibi bishi bakto department kham pra idu laga details khando na jane gina thage. For diversion of funds, corruption and failure in implementation of the policy. Besides proper dissemination of information, implementation of many welfare schemes are also hampered due to the inefficiency at the administrative level, which can be attributed to, again, improper monitoring, lack of accountability, corruption, and misalignment of incentives. The policies are made in the ministry levels but implemented at the state, district, and village levels. Therefore, there is a need to strengthen the grassroots governance, while proper feedback should also be channelized to the policymakers to modify the systematic
flaws and difficulties. NICSE is the only institute in Nagaland with super infrastructure and is the largest institute not just in Nagaland but in entire Northeast. General Studies is a major part of the syllabus and needs thorough coverage of history, Indian polity, Indian economy, and geography. All GS faculty at NICSE are from Delhi because you deserve nothing but the best. It has top faculties of Nagaland to teach Nagaland aspects. No one else can teach us better about our people and our land. Tests are important. At NICSE, highest number of prelims and mains test series are conducted. We have unmatched track record of best results since 2013. NICSE is soon to be 10 years old in Nagaland. 10 years of success, 10 years of trust, 10 years of service to Naga youth, 10 years of number one. Russia pra Ukraine loga military operation jai thake opode leader Manish Tiwari pra kushe inilaga non-aligned movement policy do 1991 pra khotamushe aro itia ini India pra idu same policy do trade back kruli bhavishe kule consequences to face kro. यूक्रेन के ऊपर एक नाजायज हमला रूस द्वारा किया गया है और रूस भारत का मित्र है और भारत की मित्रता रूस के साथ बहुत पुरानी है। हमारे बुरे वक्त में रूस हमारे काम भी आया है, पर अगर कोई मित्र और कोई मित्र देश गलती करता है तो हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि उस मित्र को ये कहना कि ये जो आपने रुख अपनाया है ये रुख सही नहीं है। यूक्रेन के ऊपर जो जंग रूस ने छेड़ी है और जिस तरह से यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया गया है उसके कुछ भी ऐतिहासिक कारण राष्ट्रपति पुतिन बताने की कोशिश करें, पर ऐसी कार्रवाई की 21वीं सदी में कोई जगह नहीं है। Election jitu karne BJP pra kuki militant group logo miligina ase kuigina Congress pra claim kriado Manipur Chief Minister and Biren Singh pra misa ase kuigina kushe dulaga statement do CM pra kita Manipur Assembly post laga first phase kane press conference thake homoy janai dishe. And the cohesive relationship between the different community in the streets. These are the main achievement of the BJP. Do you think time has come for the people of Manipur to reciprocate and get BJP more than 46? That is very true. This is a time to reciprocate to the Honorable Prime Minister, to the BJP, for what he has contributed for the state, what he has done for the state, what he has done to the people of the Manipur. That might be their opinion. We don't have any persuasion, we don't have any connection with any kind of shoe or anything. That might be their own individual stand. Union Security Council resolution draft ko de Moscow ge demand kurina tai Ukraine ge attack nukro Kuado Russia pra vote kushe. Idu resolution pra Russia ge talaka troops Ukraine de phutado sub withdraw kurule koe kude Russia ge 11 vote against Asia or China, India or United Arab Emirates kampra voting de abstain kushe. Russia laga idu full-fledged attack Ukraine de pra 137 civilians or military personnel kan murigina se first date in there. India is deeply disturbed by the recent turn of developments in Ukraine. We urge that all efforts are made for the immediate cessation of violence and hostilities. No solution can ever be arrived at the cost of human lives. We are also deeply concerned about the welfare and security of the Indian community, including a large number of Indian students in Ukraine. The contemporary global order has been built on the UN Charter, international law, and respect for the sovereignty and territorial integrity of states. All member states need to honor these principles in finding a constructive way forward. Draft resolution kuntu Russia pra vote kushe idu the Western countries kanaga
জিতিয়া হৈছে কেলে কলে এটা ৰাছিয়া দ ইন্টাৰনেশ্যনেল আইসোলেশন কৰি দিছে দু ড্ৰাফট ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটছ আৰু ইণ্ডিয়া পৰা ভোট দিবলৈ abstain কৰিছে হুলিবি alak 11 country members council members kan prado in favor de vote kuise US or telaga supporters kan jani thagise ki idu resolution do pass no koina kilo kole Russia pra UNSC laga revolving president ase the rotation laga hisabte du draft vote pra highlight kuise ki Russia do international isolation hobo koina We believe that the sovereignty and territorial integrity of all states should be respected and that the purposes and principles of the UN Charter should be jointly upheld. It is the vast number of innocent people that will be the victims. We must draw profound lessons from the extremely painful experience in the past. Based on the above mentioned, China abstained in the vote just now. Security of one country cannot come at the cost of undermining the security of other nations, and that much less can regional security be secured through group strengthening and, from that matter, group expansion. Chief February 26 se Union Health Minister Manshuk Mandavia pra Delhi de polio national immunization day do launch kurise kuntu national immunization drive laga part de se ene goigina minister pra 5 saal pra committee bacha khan ge polio drops minister kuri dise Mandavia pra tweet kuri gina kushe desh to healthy banawa karne bacha khan ke healthy rakhibole jaruri ase aro family member khan ke nijo bacha ge polio drops to administered kurule karne age ayule request kushe हम हमारे बच्चे को वैक्सीनेशन दे के उसको डिसीज के सामने सुरक्षा प्रदान करते हैं जब देश पोलियो फ्री तो हो चुका है लेकिन हमारे पड़ोसी देश अभी पोलियो फ्री नहीं हुए हैं या तो अभी भी केस दिखाई दे रहा है या तो दुनिया में एक भी केस दिखाई दे तब तक मैं मानता हूं कि सतर्कता की आवश्यकता है और इस सतर्कता की आवश्यकता के तौर पर हमें वैक्सीनेशन अभियान कंटिन्यूस चलाते रहने की भी आवश्यकता है और इसलिए देश के 5 इयर्स से बिलो करीबन 15 करोड़ बच्चे को वैक्सीनेशन करना है Chief February 26 Gujarat Karnavati University de Ahmedabad Design Week 3.0 to thagise program de Indian Army Chief General MM Narayan pra attend kurise nega hoigina occasion de khota kuriya homoy kuse army laga concern de ki kinile bi 85% to Indian companies pra ase Lucknow pra defense industry laga entire ecosystem bodli kurole modot kuise kugina kuse But the government is also contributing a lot to design and innovation. In the recent budget, 25% of the defense R&D budget has been specifically earmarked for private industry. And I think this is the first of its kind initiative by the government, once again to catalyze R&D in the civil arena. And also 68% of whatever we buy, Army, Navy, Air Force, the orders will go to indigenous companies, to our own companies. But let me also tell you that we are far ahead of this target. India Praja 24 Ganta Bitorde 28.29 lakh Prabishi vaccine doses administered Green se. India laga total COVID-19 vaccination coverage to 177.17 crore Parushi Kugina, Union Health Ministry Prajanadisha. Ministry laga hisabte 23,598 patients can ballot huijeshe. 24 Ganta de Arudupra ita recovery total do 4 crore 22,70,482 days. India laga recovery rate itia 98.52% de khara kurigina ase aro 1,21,881 active cases thake ase. India de itia tak 76.57 crore COVID-19 cumulative test kurigina ase. This is Roundup News at Hornbilltv.